Dear students, now we are going to discuss AC circuit containing capacitor and resistor. Right? See this very diagram. In this very diagram, we have two electrical equipments, a capacitor and a resistor. Capacitor is of capacitance C and resistor is of resistance R. Both are connected in series, and this very combination is connected to a source of alternating voltage E equal to E0 sin omega t. Let us suppose at any particular instant of time current is flowing from left direction and current flowing is I, right? Then from here, from either Kirchhoff rule or in simple way, we should write at time t, potential difference A should be equal to potential difference Vc plus potential difference Vr. It means that net applied voltage at any time t will be equal to potential difference developed across capacitor plus potential difference developed across resistor. But really यह लिखना चाहिए था, but really when we will think over phases, then we know that across resistor both current and voltage are in phase, but in case of capacitor current leads in phase from voltage by pi by 2. इट मीन दैट रेसिस्टर और कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज के बीच में जो फेज होगा दैट विल नॉट बी सेम, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, राइट? सो टू सॉल्व दिस वेरी कंडीशन वी टेक हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. सो वी कांट राइट E equal to Vc plus VR. Here applied voltage at, let us suppose at any time t, applied voltage is equal to E0 sin omega t. Current flowing in the circuit is equal to I. Potential difference developed across the resistor is, let us suppose V equal to VR, which is equal to I into R, and potential difference developed across capacitor is Vc, which is equal to I into Xc, right? Now see here, across resistor both current and voltage are in phase. No doubt हमने यह पढ़ा है कि करंट और वोल्टेज रेसिस्टर के क्रॉस दोनों फेज में होते हैं, बट अक्रॉस कैपेसिटर देयर इज डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड दैट वेरी डिफरेंस इज पाई बाय 2. वी यूज टू से वोल्टेज लैग्स इन फेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज लैग्स इन फेज from current by angle pi by 2, right? It means that what you will say here कि if no doubt current same current is flowing, और अगर current जो है आप ज़ीरो लेते हैं, then potential difference developed across resistor will be also zero, means minimum, but potential difference developed across capacitor will be maximum, but that is along left direction, right? So to solve this very condition, we take help of phasor diagram. It means that simply we can't write E equal to VR plus Vc. We take help of phasor diagram. Then see here, see this very phasor diagram. Let us suppose along horizontal direction we have टेकन रिफरेंस लेवल नहीं, मतलब रिफरेंस लेवल लेंगे तब तो भाई ओमेगा टी EMF का भी वोल्टेज का भी क्या कहते हैं फेज है. लेट अस सपोज हमने करंट को जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया, राइट? देन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस रेसिस्टर विल बी आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन, बिकॉज बिटवीन VR एंड I देयर इज नो फेज डिफरेंस, बट अक्रॉस कॉम्बिनेशन there is phase difference between current and voltage. We used to say across capacitor Vc lags in phase from current by angle pi by 2, 90 डिग्री से पीछे रहता है,
राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेयर वी आर इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वी सी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस will be vector sum of these two. So by the help of triangle law we can find, right। तो VC ले लो, VC जो है हमने ले लिया राइट डायरेक्शन में, VC राइट डायरेक्शन में ले लिया, वी आर राइट डायरेक्शन में ले लिया, और VC जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो है बाय यूजिंग फॉर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, इसको पैरेलली जो है इसके VR के हेड पर ले जाइए, देन इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, then resultant will be this, which is equal to E, which is equal to applied voltage. So what we should write here? Here we should write by the help of triangle law, E square will be equal to V square plus VC square, or E square will be equal to VR equal to I square into R square, and VC equal to I square into XC square. When you will take I square common, then it will become E square will be equal to I square into R square plus XC square, and from this we can write I will be equal to E by R square plus XC square, right? I equal to E by R square plus XC square. नाउ कंपेयर दिस वेरी इक्वेशन जो अभी हमने निकाला करंट का विथ ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R, इट मीन दैट फ्रॉम दिस वी कैन राइट I विल बी इक्वल टू V बाय R, और वहाँ क्या आ रहा था, E बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, इट मीन दैट वी कैन से दिस वेरी वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस, दिस वेरी वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस, right? It means that we can write a square root of R square plus XC square acts as resistance, which is also known as effective opposition, right? And for this very effective opposition we gave a special name whose name is impedance, which is denoted by sign Z. It means that we can write Z will be equal to a square root of R square plus 1 by omega C to the power 2, right? This is the equation of effective opposition. This is the equation of effective opposition. Now here applied EMF, when you will see phasor diagram, जब phasor diagram देखेंगे, जब आप phasor diagram देखेंगे, then what you will say, applied EMF or you can say resultant EMF will lag in phase from current by angle phi, where tan phi we can write tan phi will be equal to this by this, means VC by VR, right? So we can write here applied EMF is lagging in phase from current by angle phi, where tan phi equal to VC by VR, which is equal to I into XC by IR, which is equal to XC by R, and XC is equal to 1 by omega C. So we can write tan phi equal to 1 by omega C by R. It means that we can say applied voltage is lagging in phase from current by phi, where tan phi equal to 1 by omega C by R, right? Here we are getting two equations, one equation of opposition and second equation of phase, right? These two are general equation. यह जो हमने पाया है combination of two means combination of capacitor and resistor के लिए, right? अगर अकेले रहता तो जो हम लोग फार्मूला शुरू में डिफाइन किए हैं उससे मैच करना चाहिए। जरा सा आ जाइए तो देख लीजिए, तो लेट अस सपोज व्हेन देयर विल बी ओनली रेसिस्टर, जब ओनली रेसिस्टर रहेगा मीन्स व्हेन देयर विल बी नो कैपेसिटर, देन इन दिस वेरी इक्वेशन C विल बी जीरो, सो C विल बी जीरो, इट मीन दैट यू कैन से when there will be no capacitor, then you can say Xc will be also zero. When Xc will be zero, then Z will be equal to only a square root of R square, which is equal to R, means resistance जो होगा केवल R होगा,
तो होता ही है रेसिस्टिव सर्किट में केवल रेसिस्टेंस जो अपोजिशन आर होता है, राइट। अब फेज डिफरेंस हमने पढ़ा है इन केस ऑफ रेसिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस। सी दिस वेरी इक्वेशन tan phi इक्वल टू 1/ωc/r और इज इक्वल टू XC/R। जब XC नहीं रहेगा देन इट विल बिकम tan phi इक्वल टू 0/R which is equal to 0, then phi equal to 0. It means that phase difference between current and voltage will be 0. It means that there will be no phase difference. In case of only capacitive circuit, जो केवल कैपेसिटर रहेगा जिस सर्किट में Z will be equal to, जब केवल कैपेसिटर रहेगा तो Z आपका जो हो जाएगा that will be equal to मीन्स केवल कैपेसिटर रहेगा तो R 0 होगा, केवल XC रहेगा देन इट विल बी इक्वल टू, यू कैन से XC टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू XC, राइट, एंड विच इज इक्वल टू 1/ωc। तो यही तो पढ़े थे कैपेसिटिव सर्किट में, इफेक्टिव अपोजिशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ओनली 1/ωc। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाट विल बी फेज डिफरेंस। तो हमने यह पढ़ा है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट phase difference will be pi/2. Here EMF will lag in phase. Here EMF will lag in phase from current by pi/2. चलिए उसको भी जरा देख लीजिए। तो tan phi equal to XC/R when there will be no resistance, then tan phi will be equal to only XC, right? Tan phi will be equal to only when there will be no resistor, only capacitor, then tan phi will be equal to what? 10 means resistance will become 0. Resistance will become 0. So the equation which we are getting here, tan phi equal to XC/R, when R will become 0, then XC/0 equal to infinity. Infinity means tan phi is equal to infinity, then phi will be equal to pi/2. Phi will be equal to pi/2. It means that what we should write? There will be phase difference of pi/2. और यही हमने पढ़ा है कि in case of inductive circuit there is phase difference of pi/2, right? Okay.